हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रीड टू लीड चैनल। ओके, सो आज के स्टडी विथ मी ब्लॉग्स में आप सभी को स्वागत है। ठीक है, उससे पहले कुछ पाठ पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, गुरु वंदना एक बार करेंगे। ठीक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रणाम गुरुदेव। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। ओम भैरवाय नमः। 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 ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धत्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धत्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धत्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देवकार्य समुद्यता उद्यत भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समपुनिता रागस्वरूप पाषाढ्या क्रोधकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पंचतन्मात्रशायका निजारुण प्रभापूरा मज्जत ब्रह्माण्डमण्डला चंपका सुखपुन्नाग सौगंधिका लसत्कचा गुरुविंदमणि श्रेणी कनकोटिरमंडिता अष्टमी चंद्र विभ्राज दलितस्थल शोभिता मुखचंद्रकलंकाभ मृगनाभिविषेका वदनस्मर मंगल्य गृहतोरण चिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मिनावलोचना नवचंपक पुष्पाभ नासादंड विराजिता ताराकांति तिरस्कारी नासाभरण भासुरा कदम्ब मंजरी कृत्त कर्णापूर मनोहरा ताटंक इवळीभूत तमनोदुपमंडला पद्मराग शिलादर्श परिभावी कपोलभु नवविद्रुम बिंब श्री न्यक्कारी दशनक्षदा शुद्ध विद्यांकुराकार द्यूच पंक्ति द्वयोज्ज्वला कर्पूर वीटिकामोद समाकर्षित गंतरा बीज संलाप माधुर्य विनिर्हर्षित कच्छपि मंदस्मित प्रभापूर मज्जत कामे समानसा। प्रणाम प्रणाम। तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड कंट्रोल ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, और ये मैं किस बुक से पढ़ रहा हूँ? ये मैं पढ़ रहा हूँ गाइटन एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। ठीक है, गाइटन एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। ठीक, चलो पढ़ते हैं। So chapter number 1, functional organization of a human body and a control of a internal environment. Okay, so glossary of a term, learning objective हमें यहाँ पर क्या मिलेगा?
कंपेयर इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को आप कंपेयर कर सकते हो। डिफाइन होम्योस्टेसिस। बेसिकली देखो, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है वो इंट्रासेलुलर, क्योंकि इस सब्जेक्ट को मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, ठीक है। मतलब सब तो नहीं कहूँगा कि मुझे पता हो गया, लेकिन जितना मेरे फिंगर टिप में रहता है वो बता सकता हूँ। मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर जो फ्लूइड पाया जाता है वो होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। एंड जो दो सेल के बीच में, मान लीजिए ये हो गया एक सेल, ये हो गया एक सेल, इसके बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है वो होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एंड आगे चल करके फ्लूइड के ऊपर सेपरेट चैप्टर है, ठीक है। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपका सोडियम एंड क्लोराइड आयन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है एक्स्ट्रा में। लेकिन इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है तो उसमें आपका जैसे कि हो गया पोटासियम आयन हो गया, फॉस्फेट आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सेल को सर्वाइव करने के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, तो ये सारा जितने भी पोषक तत्व है मिनरल्स है वो यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। एंड होम्योस्टेसिस का मतलब होता है नियरली कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। एंड आपका इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है? आपका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। व्हाई एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इज नोन एज द इंटरनल एनवायरनमेंट? बिकॉज सेल तभी सर्वाइव कर पाएगा जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो आपका मतलब क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होता है जैसे ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारे जितने भी तत्व हैं, अमाइनो एसिड हो गया, फैटी एसिड आई थिंक भी ये होता है, यहाँ पर लिखा गया है हाँ, फैटी एसिड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, तो these are necessary for the development of the cell, for the growth of the cell, ठीक है। तो ये सब सेल किसके लिए निर्भर करेगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? फीडबैक मतलब मान लीजिए कोई सिस्टम बढ़ रहा है बॉडी में, मान लीजिए हार्मोन बढ़ रहा है, तो हार्मोन अगर ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर आएगा तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसको नीचे लाने के लिए हमारे बॉडी में ये सब सिस्टम होता है। ये सिस्टम क्या करेगा? ये सिस्टम बॉडी को वापस से नॉर्मल करेगा। उसका मैकेनिज्म बाद में देखेंगे, लेकिन मोटा मोटी बात है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जनरली बढ़ा हुआ चीज़ को नॉर्मल स्तर पर लाता है। हालांकि नेगेटिव फीडबैक जो नीचे वाला वैल्यू होता है, मान लीजिए आपका हार्मोन नीचे जा रहा है तो नेगेटिव फीडबैक वहाँ पर भी काम करता है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव फीडबैक सिर्फ ऊपर जाने वाला वैल्यू पर काम करता है, ऐसा नहीं। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक जो होता है वो अक्सर नीचे जाने वाले वैल्यू पर काम करता है। मतलब आप अगर देखोगे, पॉजिटिव का मतलब क्या है? जो इंक्रीज कर दे। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? जो डिक्रीज कर दे। मान लीजिए हार्मोन हाई सर्कुलेटिंग हार्मोन बढ़ गया, तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? जो रिड्यूस कर दे। तो हार्मोन अभी ज़्यादा है तो हार्मोन नीचे आना, दिस इज नेगेटिव फीडबैक। एंड हमारे बॉडी में अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को अगर कंपेयर करोगे तो ज़्यादातर जो फंक्शन हमारे बॉडी में रन आउट होता है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तहत होता है। तो ये फिंगर टिप पर मेरे दिमाग में आ चुका है, लेकिन फिर भी इसे पढ़ूंगा क्योंकि बहुत सारे चीज़ मैं भी नहीं जानता हूँ और भी पढ़ाई करना बाकी है। सो कंपेयर इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के बारे में हम जानेंगे। डिफाइन होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस को हम डिफाइन करेंगे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ नर्वस एंड हार्मोन सिस्टम इन द रेगुलेशन, मतलब इस चीज़ को रेगुलेशन करने के लिए
नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन सिस्टम का क्या रोल होता है। डिस्क्राइब नॉर्मल रेंजेस ऑफ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, डिस्क्राइब नॉर्मल रेंज ऑफ इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। Describe the process and the purpose of a negative feedback with example. तापर explain the concept and purpose of a gain of a control system. Describe the process and purpose of a positive feedback with example. ठीक है, अच्छा पढ़ने से पहले थोड़ा एक चीज करना पड़ेगा। सो पढ़ाई करने से पहले थोड़ा इसको मैंने लिया है पतंजलि का च्यवनप्राश, ओके, लेकिन इसको कभी मतलब रेगुलरली नहीं खाया है, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब सर्दी जुकाम मेरे को हो रहा है। पतंजलि का ये जो च्यवनप्राश है बहुत एक्सीलेंट है। स्टिल आई डू नॉट नो इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, मैं वो बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन खाने में बहुत इंटरेस्टिंग है। आज पता नहीं मतलब बॉडी में इतना गर्मी कैसे आ गया, बहुत ज्यादा बॉडी मतलब ओवर एनर्जी मुझे फील हो रहा है आज।
15 मिनट ऑलरेडी हो गया, बट कोई नहीं, पढ़ेंगे। जबरदस्त। आज बॉडी में ऑसम एनर्जी फील हो रहा है, सच मानो। मतलब ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे अभी भी सर्दी जुकाम है, अभी भी। मतलब जब मैं बाहर को कफ को एक्सपेल आउट करता हूँ तो मोटा मोटा कफ आता है। रॉनी नोज तो नहीं, लेकिन मोटा और बहलिया जैसे, मतलब सिंगानी आता है। स्टिल देन फील लॉट ऑफ एनर्जी। तो इस एनर्जी का फायदा उठाएंगे। स्टार्ट। होम्योस्टैसिस, maintenance of a near constant condition in the internal environment. मेंटेनेंस ऑफ अ नियर कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट, जो कि आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है? फीडबैक दैट रिड्यूसेस हेंस नेगेटिव द आउटपुट ऑफ ए गिवन सिस्टम। फॉर एग्जांपल, हाई सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ अ हार्मोन रिड्यूसेस द फर्दर सिक्रेशन ऑफ दैट हार्मोन, जो कि अभी अभी हमने डिस्कशन करा था थोड़ी देर पहले। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? फीडबैक दैट इंक्रीजेस हेंस पॉजिटिव द आउटपुट ऑफ ए सिस्टम। फॉर एग्जांपल, इंजुरी रिजल्टिंग इन ब्लीडिंग रिजल्ट इन रिलीज ऑफ अ क्लॉटिंग फैक्टर दैट देमसेल्फ इंक्रीज द क्लॉटिंग प्रोसेस। ठीक है, मतलब वो ये बोल रहा है कि पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। मान लीजिए आप कहीं जगह पर इंजुरी हो गया। मान लीजिए ये हो गया एक नाइफ, इस नाइफ को अगर ऐसे मैं कट कर लूँगा, ऐसे अगर कट कर लूँगा तो यहाँ पर इंजुरी हो जाएगा। तो इंजुरी होने से क्या होगा? इंजुरी होने से ब्लीडिंग होगा, मतलब ब्लीडिंग बढ़ जाएगा, ज़्यादा रक्त आएगा ना। तो ब्लीडिंग बढ़ जाने से क्या होगा? ब्लीडिंग बढ़ जाने से क्लॉटिंग फैक्टर भी बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी का ये मैकेनिज्म है। ब्लीडिंग अगर होगा तो क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ेगा, क्लॉटिंग फैक्टर अगर बढ़ेगा तो क्लॉटिंग प्रोसेस अल्टीमेटली क्या होगा? बढ़ेगा। तो एक बढ़ने से क्या होगा? हर चीज़ बढ़ेगा। गिवन सिस्टम यहाँ पर कौन है? गिवन सिस्टम आपका इंजुरी है, क्योंकि इंजुरी होने से ये सब हो रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक ये हो गया। फिजियोलॉजी इज द साइंस दैट सीक्स टू एक्सप्लेन द फिजिकल एंड केमिकल मैकेनिज्म। पढ़ाई जब करोगे 32 प्रकार के धंधा आएगा। Physiology is the science that seeks to explain the physical and chemical mechanisms that are responsible for the origin, development, and progression of life. Each type of life, from the simplest virus to the largest tree or the complicated human being, has its own functional characteristic. Therefore, the vast field of physiology can be divided into viral physiology,
bacterial physiology, cellular physiology, and a plant physiology, invertebrate physiology, vertebrate physiology, mammalian physiology, human physiology, and many more subdivision. Human physiology. The science of human physiology attempts to explain the specific characteristic and mechanism of the human body that makes it a living beings. The fact that we remain alive is the result of a complex control system. Hunger makes us seek food, and fear makes us seek refuge. Sensation of cold makes us look for warmth. Other forces causes us to seek fellowship and to reproduce. The fact that we are sensing, feeling, and knowledgeable being is part of this automatic sequence of life. These special attributes allow us to exist under a widely varying condition which otherwise would make life impossible. Cells are the living unit of the body. The basic living unit of the body is cell. Each organ is an aggregate of many different cells held together by an intercellular supporting structure. Each type of cell is specially adapted to perform one or a few particular functions. For instance, the red blood cell, numbering about 25 trillion in each human beings, transport oxygen from the lungs to the tissue. Although red blood cells are the most abundant of any single type of cell in the body, about 75 trillion additional cells of other type perform function different from those of the red blood cell. The entire body then contain about 100 trillion cell. मैंने एक बार डीप सिक से ये पूछा था, डीप सिक से, ठीक है, कि हमारे बॉडी में कितना मतलब टोटल सेल होता है. वो काउंट करके बता रहा था 35 ट्रिलियन या समथिंग, या पता नहीं 75 या 35 ट्रिलियन ऐसा कुछ बोल रहा था. 100 ट्रिलियन तो नहीं. मैं कभी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन क्योंकि ये मेडिकल साइंस का एक मेजर बुक है जो कि गाइटन एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी 4th साउथ एशिया एडिशन है, तो हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को यहाँ पर प्रिफर करेंगे. एंड ये अच्छा खासा बुक भी है, ठीक है. मुझे पता नहीं ये कंट्रोवर्सी क्यों है, लेकिन चलता है. Although many cells of the body often differ markedly from one another, all of them have certain basic characteristics that are alike. For instance, oxygen react with carbohydrate, fat, and protein to release the energy required for all cells to function. Further, the general chemical mechanism for changing nutrients into energy are basically the same in all cells, and all cells deliver the product of their chemical reaction into the surrounding fluid. Almost all cells also have the ability to reproduce additional cell of their own kind. Fortunately, when cells of a particular type are destroyed, the remaining cell of this type usually generate new cell until the supply is replenished. Now, extracellular fluid, the internal environment. क्यों है? About 60% of adult human body is fluid, mainly a water solution of iron and other substances. Although most of this fluid is inside the cell and is called as intracellular fluid, about one third is in the space outside the cell and is called as extracellular fluid. The extracellular fluid is in constant motion throughout the body. It is transported rapidly in the circulating blood and then mixed between the blood and the tissue fluid. Okay. By diffusion through the capillary walls. In the extracellular fluid,
are ions and nutrients needed by the cells to maintain life. Thus, all cells live in essentially the same environment, the extracellular fluid. For this reason, the extracellular fluid is also called as internal environment of the body or milieu interior, a term introduced more than 150 years ago by the great 19th century French physiologist Claude Bernard. Cells are capable of living, performing their special function as long as the proper concentration of oxygen, glucose, different ion, amino acid, and fatty substances, and other constituents are available in this internal environment. Now, difference between extracellular and intracellular fluid. The extracellular fluid contain large amount of sodium chloride, bicarbonate ion plus nutrient for the cell such as oxygen, glucose, fatty acid and amino acid. It also contain carbon dioxide that is being transported from the cell to the lungs to be excreted, plus other cellular waste product that are being transported to the kidney for excretion. The intracellular fluid differs significantly from the extracellular fluid. For example, it contains large amount of potassium, magnesium, phosphate ion instead of sodium and chloride ion found in the extracellular fluid. These differences are highlighted in figure 5.2. Special mechanism for transporting ion through the cell membrane maintain the ion concentration difference between extracellular and intracellular fluid. These transport process are discussed in chapter number 4. तो यहाँ तक हम एक पेज लगभग ख़त्म कर दिए. अब चैप्टर नंबर 2 कल हमने रीडिंग मार के ख़त्म कर दिया था. आज चैप्टर नंबर 1 जो था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी का फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है एंड कंट्रोल ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट कैसे कैसे होता है, वो हमने पूरा पढ़ा नहीं. आज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, क्योंकि इसी बुक को हम बहुत बार रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है. तो चैप्टर नंबर 2 हमारे लिए था द सेल एंड इट्स फंक्शन. आज हम सीधा पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3. और हर दिन तो इसे पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि आगे की ओर थोड़ा जाएंगे, कुछ नया पढ़ेंगे ना. आज नई तरफ से स्टार्ट करेंगे. खास करके इसी बुक से मैंने कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है. जेनेटिक कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, चैप्टर नंबर का नाम सुनो. जेनेटिक कंट्रोल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सेल फंक्शन एंड सेल रिप्रोडक्शन. ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, list the different type of RNA and indicate their function, list the steps that are involved in the genetic control of protein synthesis, describe how gene expression is regulated, okay, describe how intracellular function is controlled by enzyme, describe the basis of tests that are used to evaluate genetic function, list the steps that are involved in mitosis, define apoptosis and briefly describe the process involved. Differentiate between apoptosis, autophagy and necrosis. Glossary of term. Apoptosis, programmed cell death. जीन क्या हो गया? ए सीक्वेंस ऑफ अ डीएनए का एक सीक्वेंस है दैट कोड फॉर ए प्रोटीन और सेलुलर ट्रेट्स. नाउ इसी चैप्टर को जब आप खास करके पढ़ोगे तो आपको, क्योंकि ये फिजियोलॉजी है, तो आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा. ट्रांसलेशन, द प्रोसेस बाय व्हिच द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑन द मैसेंजर आरएनए is used to make protein in the ribosome. Almost everyone knows that genes which are located in the nuclei of all cells of the body control heredity from parents to children, but many people do not realize that these same genes also control the daily function of all the body cell.
The gene controls cell function by determining which substances are synthesized within the cell, which structure, which enzyme, and which chemical. Figure 3.1 shows the general scheme of a genetic control. Each gene, which is composed of a deoxyribonucleic acid, controls the formation of another nucleic acid, ribonucleic acid. This RNA then spread throughout the cell to control the formation of a specific protein. The entire process, from the transcription of a genetic code in the nucleus to the translation of the RNA code and the formation of a protein in the cell cytoplasm, is often referred to as gene expression. Because there are approximately 30,000 different genes in each cell, it is theoretically possible to form a large number of different cellular protein. In fact, RNA molecule transcribed from from the same segment of a DNA, that is the same gene, can be processed in more than one way by the cell, giving rise to alternate version of the protein. The total number of a different protein produced by various cell type in human is estimated to be at least 1 lakh. Some of the cellular protein are structural protein that, in association with various lipid and carbohydrate from the structure of the various intracellular organelle discussed in chapter number 2. However, the majority of the protein are enzymes that catalyze the different chemical reaction in the cell. For instance, enzyme promote all oxidative reaction that supply energy to the cell, along with synthesis of all the chemicals such as lipid, glycogen and adenosine triphosphate, जो कि एटीपी होता है. Historical dignity. Many students mistakenly attribute the discovery of a DNA to James Watson and Francis Crick. DNA was in fact identified as a nuclein in the late 1860 by Swiss chemist Frederick Mischer. The Russian biochemist Pobevas Levane, who published more than 700 paper on the chemistry of a biological molecule during his career, is credited with being the first to discover the order of three major components of a single nucleotide phosphate sugar base. The carbohydrate component of RNA मतलब राइबोज and the carbohydrate component of DNA मतलब deoxyribose. In 1944, Oswald Avery and his colleagues at Rockefeller University in US demonstrated that genes are composed of a DNA. An Austrian biochemist, Erwin Chargaff, determined that the total amount of purine A plus G and the total amount of pyrimidine C plus T are usually nearly equal, paving way for the understanding that A binds to T and C to G. Watson and Crick determined the structure of the DNA as a two-strand double helix, for which they were awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1953, the same year that Edmond Hillary and Tenzing Norgay conquered Mount Everest. Lost in the historical narrative
is the contribution of Rosalind Franklin, who obtained the image of a DNA using X-ray crystallography, which enabled Watson and Crick to develop their model of a DNA. She sadly passed away from cancer at the age of 37 before the award of a Nobel Prize. Genes in the cell nucleus control protein synthesis. Genes in the cell nucleus control protein synthesis. सो चैप्टर का नाम है, दूसरी बार बता देता हूँ, जेनेटिक कंट्रोल ऑफ अ प्रोटीन सिंथेसिस, सेल फंक्शन एंड सेल का रिप्रोडक्शन. सो जीन्स इन द सेल न्यूक्लियस कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस. In the cell nucleus, large number of genes are attached end on end in extremely long double-stranded helical molecules of a DNA having molecular weight measured in the billions. A very short segment of such a molecule is shown in figure 3.2. This के बाद में इसे देखेंगे, अभी नॉर्मल रीडिंग करते हैं. इन मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल सिंपल केमिकल कंपाउंड बाउंड टुगेदर इन ए रेगुलर पैटर्न, द डिटेल ऑफ व्हिच आर एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट फ्यू पैराग्राफ. डीएनए ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए होगा, आरएनए बाहर जाएगा, स्प्लाइसिंग होकर एमआरएनए, देन आरएनए का ट्रांसपोर्ट होगा राइबोसोम में, ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए होकर के प्रोटीन सिंथेसिस होगा, साइटोजोल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर इन्वॉल्व, ये न्यूक्लियस, ये साइटोजोल. ठीक है. Basic building blocks of a DNA. Figure 3.3 shows the basic chemical compound involved in the formation of a DNA. These compounds include phosphoric acid, number 1. A sugar called deoxyribose and a nitrogenous base, 2-purine adenine, 2-purine adenine, guanine, 2-pyrimidine, thymine, and cytosine. The phosphoric acid and a deoxyribose form the phosphoric acid and a deoxyribose form the two helical strands that are the backbone of the DNA molecule, and the nitrogenous base lie between
the two strand and connect them as illustrated in figure 3.6. Nucleotide. The first stage of a DNA formation is to combine one molecule of a phosphoric acid, one molecule of a deoxyribose, and one of the four bases to form an acidic nucleotide. Four separate nucleotides are thus formed, one for each of the four bases: deoxyadenylic, deoxythymidyllic, deoxyguanylic, and deoxycytidyllic acid. Figure 3.4 shows the chemical structure of the deoxyadenylic acid, and figure 3.5 shows simple symbol for the four nucleotides that form the DNA. Nucleotides. Nucleotides are organized to form two strands of DNA loosely bound to each other. Figure 3.6 shows the manner in which multiple number of nucleotides are bound together to form two strands of DNA. The two strands are in turn loosely bonded with each other by weak cross linkage as illustrated in figure 3.6 by the central dashes line. Note that the backbone of each DNA strand is composed of alternating phosphoric acid and a deoxyribose molecule. In turn, purine and pyrimidine bases are attached to the side of a deoxyribose molecule. Then, by means of a loose hydrogen bond, मतलब dashes line, between the purine and pyrimidine bases, the two respective DNA strands are held together. Note the following caveats. However, each purine base adenine of one strand always bond with pyrimidine base thymine of the other strand. Each purine base guanine always bond with pyrimidine base cytosine. Thus, in figure 3.6, the sequence of a complementary pair base is CG. Arrangement of a deoxyribose nucleotide in a double strand of a DNA. CG. CG, CG, GC, TA, CG, 80. GC 8080. Because of the looseness of the hydrogen bond, the two strands can pull apart with each, and they do so many times during the course of their function in the cell. To put the DNA of figure 3.6 into a proper physical perspectives, one could merely pick up the two end
and twist them into a helix. 10 pair of nucleotide are present in each full turn of the helix in the DNA molecule, as shown in figure 3.2. Okay. Genetic code. The importance of a DNA lies in its ability to control the formation of a protein in the cell, which it achieves by means of a genetic code. That is, when the two strands of a DNA molecule are split apart, the purine and pyrimidine base projecting to the side of each DNA strand are exposed, as shown by the top strand in the figure 3.7. It is these projecting base that forms the genetic code. The genetic code consists of a successive triplets of a bases. That is, each three successive base is a code word. The successive triplet eventually control the sequence of amino acid in a protein molecule that is to be synthesized in the cell. Note in figure 3.6 that the top strand of a DNA reading from left to right has the genetic code GGCAGACTT, with the triplet being separated from one another by the arrows. As we follow this genetic code through figure 3.7 and 8, we see that these three respective triplets are responsible for successive placement of the three amino acid proline, serine, glutamic acid in a newly formed molecule of a protein. तो आज के लिए फिजियोलॉजी में हम यहाँ तक हमारा बुक रीडिंग है, ठीक है। अगले सेशन में हम देखेंगे द डीएनए कोड इन ए सेल न्यूक्लियस इज ट्रांसफर्ड टू आरएनए कोड इन द सेल साइटोप्लाज्म, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। वो अगले स्टडी विथ मी ब्लॉग्स में ख़त्म करेंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट को भी थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री थोड़ा पढ़ेंगे। आई थिंक ये आ गया है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री तो हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा टाइम देंगे ताकि हर एक चीज़ हमारे लिए आसान बन जाए, ठीक है। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। आई थिंक बाप रे।
ये पूरा डेप्थ में इसे समझा। 30 पेज, 30 पेज, आप समझ सकते हो किस बुक से पढ़ रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय इंदुमती भी सौभाग्य लक्ष्मी, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, इसे भी मैंने आई थिंक 1-2 बार ख़त्म किया होगा, पूरा तो नहीं किया होगा, नहीं पूरा तो। लाइसोसोम तक मैंने पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन भी आई थिंक मैंने पढ़ चुका हूँ। कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन से मैंने पढ़ा नहीं शायद। ओके, कोई बात नहीं, फिर से शुरू करते हैं। भगवान, एते गरम कौन लगुच। So cell and organelles, cell membrane, transport across cell membrane। ऐसा इसी ब्लॉक को यहीं पर समाप्त करते हैं, दूसरा ब्लॉक बनाना पड़ेगा।